हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कोटा। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुई तो देखते हैं। एटम इज न्यूट्रल। एटम इज न्यूट्रल, सो व्हेन यू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इट गेट कन्वर्टेड टू आयन। एटम व्हेन इट इज heated, when it is ionized, it get converted to ion plus electron. So this ion will be positively charged. This ion will be positively charged, and this electron is negatively charged. So when Thomson discovered electron, it led to the conclusion that atom has negative charge. So Goldstein thought that if a neutral atom has an electron, a negative charge, then it will have a positive charge. So he took a perforated cathode. In the same experiment of cathode ray as done by J. Thomson, he took the same gas discharge tube. He applied high voltage which is similar to Thomson. He used vacuum pump to decrease the pressure of the gases. And he observed when it is perforated cathode, he observed when we take this apparatus, cathode rays are emitted from cathode and these rays strikes to the atom present in the gas discharge tube. इस ट्यूब में जो एटम्स हैं ये गैस के एटम से ये पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे और स्ट्राइक करने के बाद गैसेस जो है वो आयोनाइज हो जाएंगी। जब गैसेस आयोनाइज हो जाएंगी then they will emit electron which will start moving toward anode. These gases will emit electron which will move toward anode, but after ionizing, suppose you have atom A, it will be ionized to form A plus electron. This positive charge particle started moving toward cathode. This positive charge particle started moving toward cathode, and he observed due to perforated cathode, some of these particles cross this cathode and strikes to the surface. When they strike to the surface, they produce red glow, which confirms that there is some particles which is generated. Over here we have a real picture. If an experiment is done, this is how the experiment will look like. Here we have anode. One electron is anode while other electrode is cathode. Over here we have cathode, and these rays started moving. They cross these lines, they cross this cathode, and when they cross, they produces a red glow which confirms the presence of a ray, a particle which is referred as canal rays. These are referred as canal rays or anode ray. Similar to cathode rays started from cathode and they moved toward anode, so they are known as cathode rays. But for anode rays doesn't start from anode. They start in between the container, in between the discharge tube. Gases just start moving toward cathode, so they are referred as canal rays. But due to similarities with cathode ray, they are sometimes also referred as anode rays. तो ये apparatus है हमारे पास। इस apparatus में अगर हम देखें तो apparatus में ये है आपका गैस डिस्चार्ज ट्यूब, ये एनोड है, ये परफोरेटेड कैथोड है। तो जब हम इसमें से ये आपने यहाँ फ्लोरेसेंट स्क्रीन यूज की है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो जब हमने यहाँ पर बैटरी से करंट पास किया, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैथोड रेज स्टार्ट हुई। दिस कैथोड रेज लेड टू फॉर्मेशन ऑफ आयंस फ्रॉम विच positive charge particle canal rays are generated, and these particles start moving from this end, from positive to negative, and they strike to this fluorescent surface. Properties of canal rays. So when canal rays are generated, when anode rays are generated, these particles move from positive to negative. This particle move from positive to negative. So first property we can say that
these particles are attracted toward negative charge, so we can say that the charge on the particle is positive. The first property is they are positively charged. सेकेंड प्रॉपर्टी वह जब हमने इसके बीच में यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा, so you observe the shadow of this object. If shadow is formed, that means we can say that they travel in straight line. They travel in straight line. Shadow can only be formed by the particles or by the rays which moves in straight line. Property number 3. यहाँ पर हमने एक डायग्राम बना रखा है. हाई वोल्टेज जनरेटर. This is the apparatus for generation of anode rays. So when anode rays strikes to this turbine start moving. That means we can say that anode rays जब पास हुई तो anode ray ने अपनी एनर्जी जो है सप्लाई कर दी किसको? इस व्हील को. Anode rays ने अपनी एनर्जी अपनी काइनेटिक एनर्जी सप्लाई की. So we can say that anode rays has kinetic energy, that is they have mass. Fourth property in this diagram, if we say that this is positive charge, this is negative charge, this is anode, and we have perforated cathode. So when these rays pass through cathode, they are deviated by electric and magnetic field. So when we use electrically charged plate, these are positive charge, they are attracted by negative charge. So this is a point where they will strike due to electric field. They are moving in straight direction, they were going to strike on this place. But due to electrical field, ये deviate हो गई and they strike on this point. Let this point be A, this point be B, and this point be C. In external electric field, due to their positive charge, they are attracted toward negative charge. They are deviated from their path and they strike on point B. When magnetic field is applied in external magnetic field, being positive charge, they experience a force and strike at point C. If there is no electric or magnetic field, then they are going to strike on point A. ये रेज पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज रेज जो है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगी, पॉजिटिव रिपेल होंगी. दैट्स व्हाई दे आर डिफ्लेक्टेड. उनका पाथ चेंज हो गया और वो बी पर स्ट्राइक करेंगे. अगर उनका पाथ चेंज ना होता तो वो ए पर स्ट्राइक करते. मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से उनमें एक फोर्स लगा, जैसा आपने क्लास 10 में पढ़ा था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. उसके अकॉर्डिंग उस फोर्स की वजह से ये पॉइंट सी पर स्ट्राइक कर रही. तो ए पॉइंट यहाँ तब स्ट्राइक करेंगी जब कोई फोर्स नहीं होगा, नो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड. बी व्हेन देयर इज इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड सी व्हेन देयर इज मैग्नेटिक फील्ड. सो वी कैन से दैट दीज रेज डिफ्लेक्ट्स इन इलेक्ट्रिक एंड magnetic field. Property number 5. The charge and mass of canal rays depend upon the nature of gas filled in the gas discharge tube. Charge जो है किसी भी गैस का या canal rays का चार्ज है depend upon the type of gas filled. For example, if hydrogen is filled, if hydrogen H2 is filled, then it is converted to H plus 1 electron. If helium is filled, it is converted to helium 2 plus 2 electron. We can say that the charge over here is +1, charge over here is +2. The charge is depending upon the nature of gas field, which is opposite of cathode rays. In cathode rays, they were electron and electron always have same charge, same mass. But the gas have different mass. Hydrogen's mass is different from the mass of helium, and charge hydrogen is 1 plus and helium is 2 plus. Next point, the mass of canal rays are same as the mass of gas. If we are using hydrogen H2, then it is converted to 2H plus 2 electrons. Mass of these electrons are negligible. Mass of electron is negligible compared to mass of hydrogen atom. So we can say that mass of H2, mass of gas, is same as mass of canal rays. Mass of proton was found to be 1.672 into 10 to the power minus 27 kg.
while charge of proton was found to be 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, but with a positive sign. Charge of electron is negative, charge of proton is positive. So mass and charge of proton is same as the charge of electron, but mass of proton is much higher than the mass of electron. प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो इक्वल है, लेकिन प्रोटॉन का मास जब हमने इलेक्ट्रॉन के मास से कंपेयर किया तो मास ऑफ प्रोटॉन is equals to 1836 into mass of electron. So compared to the mass of proton, the mass of electron can be neglected. Compared to the mass of proton, mass of electron can be neglected. So we have some important point regarding cathode rays, anode rays. First of all, with motion. Motion means their movement. So cathode rays travel in a straight line, anode rays also travel in a straight line. Second property is charge. So charge, we can say that there is difference in the charges. Cathode rays are negatively charged, while anode rays are positively charged. They are deflected toward positive plate. If there is negative charge, then it will be deflected toward positive plate, and if there is positive charge, then they are deflected toward negative plate. If we talk about the constituents, we talk about the particles. ये कैसे बनी है? तो पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? कैथोड रेज में पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, while एनोड रेज में पार्टिकल्स वो क्या है? दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. दे चेंज विद द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द गैस. देन क्वांटिटी ऑफ चार्ज टू द मास. This is also referred as E by M ratio. So for E by M ratio, electrons always have fixed E by M ratio. Electrons always have fixed E by M ratio, that is 1.75 into 10 to the power 11 coulomb per kg. Electrons have fixed ratios of charge to mass, but for anode rays, this charge to mass ratio depend upon the number of electron the atom has lost. Suppose we have helium and helium lost one electron, then it is helium plus. It can also lose 2 electrons to form helium 2 plus. So charge to mass ratio will change depending upon the number of electrons the atom have lost. It depends upon the mass of the particle also. If you fill helium instead of hydrogen, if you fill oxygen, जैसे जैसे गैस चेंज होती जाएंगी कंटेनर में, उनका मास भी चेंज होता जाएगा. तो इन पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स पर और मास ऑफ द गैस पर डिपेंड करता है. लास्ट पॉइंट इज ओरिजिन, हाउ दे आर ओरिजिनेटेड. सो फॉर कैथोड रेज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कैथोड रेज. बट फॉर एनोड रेज आर प्रोड्यूस्ड from the space in between anode and cathode. They are not generated at anode. एनोड रेज जो है वो एनोड से स्टार्ट नहीं होती, वो एनोड और कैथोड के बीच के गैप से, बीच के स्पेस से स्टार्ट होकर कैथोड की तरफ जाती हैं. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कैनाल रेज. प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी. न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक. न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन ईयर 1932. 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किए. इसके पहले रदरफोर्ड ने ये एस्टिमेट किया था कि एटम में कोई ऐसा पार्टिकल होता है विच इज चार्जलेस, बट इट कैन नॉट बी प्रूव्ड अंटिल जेम्स चैडविक परफॉर्म्ड द एक्सपेरिमेंट. उन्होंने क्या किया? उन्होंने अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए बेरिलियम शीट पर. ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल ऑन बेरिलियम शीट. तो आफ्टर बम्बार्डमेंट he bombarded alpha particles on beryllium sheet. After bombardment, he observed that alpha particle, which is helium's nucleus, helium with atomic number 2, mass number 4, when bombarded on beryllium sheet, beryllium is atomic number 4, mass number 9. The resultant product is, it led to formation of carbon atom whose atomic number is 6, mass number is 12, plus there is a particle formed after the reaction which has a mass but it does not have charge.
So you can say for this particle, atomic number is 0. Atomic number is number of proton. But there's a mass which is equals to mass of proton. This particle is referred as neutron. Why it is known as neutron? Because it is a neutral particle. Neutron is a neutral particle whose mass is approximately equal to the mass of proton, which is 1.674 into 10 to the power minus 27 kg. So mass of neutron is 1.674 into 10 to power minus 27 kg. Charge is 0. Charge is 0. Neutron is chargeless. 1932 में जेम्स चैडविक ने पहली बार न्यूट्रॉन डिस्कवर किया। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? उन्होंने बम्बार्ड किए अल्फा पार्टिकल्स ऑन थिन बेरिलियम शीट। बेरिलियम की थिन शीट पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए एंड यू ऑब्जर्व दैट एक पार्टिकल ऐसा एमिट होता है जिसका जो चार्ज है वो 0 है और मास जो है वो प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा है। तो प्रोटॉन का मास कितना था? Mass of proton was equal to 1.672 into 10 to the power minus 27 kg. Mass of neutron is 1.674 into 10 to the power minus 27 kg. अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने डाउट शेयर कीजिए हमारे साथ कमेंट सेक्शन में, और हमें बताइए कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।